Assalamu alaikum everyone. This is Gulazara here to bring a newspaper breakdown session courtesy of the KIF network. Now Ramzan is just around the corner and I would say it again. आपका ईमान कमज़ोर नहीं है, आपका immune system कमज़ोर है. So please stay at home. Try to say your prayers at home क्योंकि मस्जिद ये एक जगह नहीं है जहाँ पे इबादत कर सकते हैं. ना ही मस्जिद वो जगह है जहाँ आपको रब मिल सकता है. आपको अल्लाह कहीं भी मिल सकता है. So please stay at home. Try to practice your religion at home and please do not get embroiled into religious fervor कि ये यहूदी साजिश है. ये यहूदी साजिश नहीं है. This is a disease and diseases do not discriminate between caste, color and religion. So, for today, what we are going to be discussing is the rise of autocratic measures in response to the coronavirus pandemic and how some states are using the pandemic response as a means to forward their own autocratic measures. Now, in a recent daily televised press briefing, US President Donald J. Trump said in response to a reporter's question that he enjoys, as the President of the United States, absolute power and has the power to circumvent any measure that states inside America have put forward to enforce the stay-at-home orders and economic lockdowns. Now, within a day of this statement, he was forced to retract it as he came under fire from politicians that were both Democratic and Republicans. Now, the thing over here is that in a country like America, even though their president is of an autocratic turn of mind, आप ऐसी statements के साथ जो है वो you cannot move forward because there are people to call you out on it. The democratic process in America has been in place for more than 200 years. It is an established democracy. And in an established democracy like America, वहाँ बहुत मुश्किल है कि आप autocratic measures जो हैं उनको बहुत आगे तक लेके चलें without getting a lot of flack from the people. Now, in contrast to that, we have Viktor Orban, who is the president of Hungary. On 30th March, with vast approval from the Senate, he set forward a new emergency protocol that allowed him unlimited power during the length of the coronavirus pandemic. यहाँ आपके पास क्या नजर आ रहा है? यहाँ ऑटोक्रेसी की बिगिनिंग है. ठीक है, यहाँ आपके पास एक ऑटोक्रेट जो है वो इज अ वुड बी ऑटोक्रेट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट हिज रूल एंड पावर एंड ही एंजॉयज a vast support inside his own parliament. And the people do not know that they are being conned. So you see, in times like these, the danger to democracy is not in stronger established democratic countries. In fact, it is in weaker states where democracy has always been a very fragile, you can say, state of mind or a state of affairs. We have other examples as well. But first, I'm going to start off with quoting statistics from the Center for Civil and Political Rights, that is a watchdog which is based in Geneva, that say that about 84 countries in the world have set forward emergency laws. Emergency में क्या होता है? Emergency में अक्सर औकात आपकी constitution भी circumvent हो जाती है. So, autocrats and would-be autocrats are using the excuse of the coronavirus pandemic to put forward strong measures and consolidate an iron grip onto the people in pretext of furthering public welfare and in the name of public health. आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आपके पास पॉलिटिशियंस और ऑटोक्रेट्स ने केओस को इस्तेमाल किया टू फर्दर देयर ओन रूल. Now I'm going to quote two extremely strong examples. Number one is during 2004 जब आपके पास Beslan school massacre हुआ था in Russia. So, during the Beslan school massacre, a whole school in Beslan, which is a small town inside Russia, was held hostage by terrorists, and a lot of students, teachers, and their parents were killed as well during the siege. Now, after that, during this horrific time period, and after that as well, President Vladimir Putin sought to consolidate his rule over Russia. Now the measures that he put forward after the school massacre was that in Russia, no governor would be directly elected for the states. In fact, वो governors बैठेंगे states की ruling seat के ऊपर जो कि president खुद select करेगा. So यहाँ आपके पास यहाँ आपके पास क्या example आ रही है कि president जो है he is now enjoying the power to elect his own representatives
और टू गिव देम सीट्स इनसाइड देयर ओन स्टेट्स। वो लोग जो कि प्रेसिडेंट के साथ जो है वो फेवर रखते थे, दे आर गोइंग टू गेट सीट्स इनसाइड द इनसाइड डिफरेंट सेटअप्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। Now, in the same way, during a 2016 coup to remove President Recep Tayyip Erdogan, ठीक है, उसके बाद during the 2017 referendum that was put forward by Recep Tayyip Erdogan himself, and using the nationalistic and democratic fever to move himself from a position to of extreme power inside Turkey. So you see, chaos has been used as a weapon by would-be autocrats or autocrats to consolidate and further strengthen their rule over their people. So अब कोरोना वायरस के हिसाब से आपके पास जो है वो कौन से आप मेजर्स यूज कर रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक है? वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एज ऑफ राइट नाउ एज वेल। इन कैम्बोडिया आपके पास जो है वो हुन सेन की गवर्नेंस है। ही इज द प्रेसिडेंट एंड ही हैज बीन द प्रेसिडेंट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। नाउ द थिंग इज कि एक न्यू इमरजेंसी लॉ जो है वो दैट हैज बीन सेट फॉरवर्ड बाय द कंबोडियन गवर्नमेंट दैट गिव्स द प्रेसिडेंट इवन मोर अनलिमिटेड पावर्स। अब इन अनलिमिटेड पावर्स में क्या आता है? टू सेट डाउन एंड लिफ्ट मार्शल लॉ एज they want, and also 10 years imprisonment for anyone who is violating the lockdown. Now in this case ये प्रिजन सेंटेंस उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है दैट आर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ऑफ हुन सेन, एंड इन दिस रिगार्ड सोशल डिस्टेंसिंग कैन बी अप्लाइड सेलेक्टिवली। वी हैव द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एज वेल, जहाँ आपके पास एक कम्युनलाइजेशन ऑफ द इशू, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी हुई है, लेकिन हाउ इज दैट ऑटोक्रेटिक, उसके ऊपर हम बात करते हैं। नाउ कम्युनलाइजिंग द पेंडेमिक, ठीक है, हैज बीन अ रिस्पॉन्स दैट इज ingrained in to history books, और बताया जाता है आपको भी, ये पहले भी मैंने बात की थी कि religious factions were always blamed for bringing about the pandemic or for bringing about disease, or were labeled as a biohazard. Now, according to Mitali Saran, who is a journalist, a very well-known journalist inside India and a political dissident as well, she says that after painting the Muslims as a demographic, cultural, sexual, and security threat, now the BJP government is busily painting them as a biohazard as well. तबलीगी जमात का आप सबने सुना होगा कि तबलीगी जमात जो दिल्ली में कॉन्ग्रीगेशन हुई थी, जहाँ आपके पास वहाँ से मजीद 12,000 केसेस जो है वो ट्रेस हुए थे, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि बीजेपी के रूलिंग जो है वो पॉलिटिशियन उनकी वेडिंग के अंदर जो है वो करीबन 25,000 लोग जो है वो उनकी अटेंडेंस थी, और वहाँ जो आपके पास टेस्टिंग नहीं हुई। सो आप देख रहे हैं कि एक बायस बनता आ रहा है। This pandemic, this communalization of the pandemic is also being used to further the Modi government's autocratic Hindutva policies, जहां आपके पास एक sizable minority को relegate कर दिया गया to third class citizens, and thereby in communalizing the issue, you can say the attention is being diverted from the issue at hand, which is the Modi government's extremely lackluster response towards the pandemic. और यहाँ आपके पास किसको blame किया जा रहा है? The minorities. ठीक है, तो social distancing number one is being practiced selectively. Autocratic measures are being used as a pretext for the pandemic response. ठीक है, आपके पास जो है माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, और आपके पास एक और चीज क्या हो रही है, आपके पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो डिरेल हो रहा है। दीज आर द 4 थिंग्स दैट हैव नाउ बिकम द हॉलमार्क फॉर ऑटोक्रेटिक कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में आपके पास जो है वो लॉकडाउन फोर्सिबली इम्पोज किया जा रहा है, एंड यू हैव सीन दोज हॉरिफिक पिक्चर्स where migrant workers were sprayed with bleach and beaten on by batons by Indian police to make them stay away from the general populace. So आपके पास जो है वो एक stratification नजर आना शुरू हो गई है that is almost autocratic in nature, and also allows the BJP government to have unlimited power over the narrative of the country. In the same way, आपके पास El Salvador, which is a country in Latin America,
That is also that is also a prime example of how autocratic measures are being used to curb political dissidents. एल सेल्वाडोर में आप भी आपके पास जो है वो बहुत ही लैकलस्टर पेंडेमिक रिस्पॉन्स नजर आ रहा है एंड पीपल हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट द लॉकडाउन दैट इज नॉट गिविंग देम दैट इज एंड during this lockdown they're not being provided food and no shelter for the homeless people. There's no testing, there's no mass spread widespread testing. And in response to that, about 25,000 protesters were jailed in El Salvador, thereby giving, you can say, underlining the social distancing mantra. मतलब जेल्स में कहाँ आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग होगी? अगर आप लोगों को पकड़ पकड़ के जेल्स में डाल रहे हैं फॉर वायलेटिंग द लॉकडाउन, दैट इज डिफीटिंग द पर्पज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग. ऑल्सो एज आई सेड बिफोर दैट सोशल डिस्टेंसिंग और अरेस्टिंग द पीपल दैट आर वायलेटिंग द सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स कैन बी सिलेक्टिव एज वेल. हु इज देयर टू क्वेश्चन यू जब आप एक अपने पॉलिटिकल डिसेंडेंट जो है उसको आप जेल कर देते हैं इवन दो ही इज नॉट इन वायलेशन ऑफ द लॉकडाउन. सो यू सी, pandemic response is being used to generate autocratic response. We have other examples as well. For example, in Bolivia, ठीक है, Latin America के अंदर it is rift with examples right now, जहाँ आप ये देख सकते हैं कि autocracy is at its best. Latin America में आपको पता है कि there is the democratic process over there is extremely fragile and it has always been, you can say, under in danger from countries in danger from the country's ruling elite. Now अब आपके पास जो है वो जीनीन एनेस की एग्जांपल आती है. जीनीन एनेस is the interim president in Bolivia and she has said that she is going to impose a 10-year sentence on people who are spreading misinformation about the coronavirus. अब ये मिस इन्फॉर्मेशन ये भी तो हो सकती है कि उनके पेंडेमिक रिस्पॉन्स को जो है वो पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स और पीपल यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यू कैन से आर बीइंग द फोकस ऑफ दिस 10-year sentence. She has a penchant for removing political descendants, and she has also recently removed a radio channel that was criticizing her policies. So, authoritarianism and autocracy is now fast becoming the byword in countries जहाँ आपके पास democratic process जो है वो एक बहुत weak state में मौजूद है. और एक और चीज़ जो कि बहुत important है वो अब coming to the second part of it is that कि आपके पास मीडिया को कर्ब करना, ठीक है, और डिसेंट को कर्ब करना यूजिंग सोशल डिस्टेंसिंग सिलेक्टिवली, ठीक है, एंड ऑल्सो अरेस्टिंग पीपल on the basis of violating the lockdown, but in fact they are descendants or they are just political naysayers. So let us talk about how the press is being undermined. All right, यहाँ अभी हमने बात की है अबाउट जिनीन एनियस, ठीक है, जो जिन्होंने जो है वो एक 10-year you can say a 10-year sentence has been imposed on people spreading in misinformation. लेकिन is it going to be used in a proper context? I don't think so. In the same way, आप ये एक autocracy का मोड जो है वो आप अमेरिका के अंदर भी देखते हैं जहाँ the press is being maligned on a daily basis for not dovetailing their narrative with the narrative of the federal government. एक और चीज़ जो कि हम पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको एक तरह अभी जो सोशल मीडिया कर्व्स जो अनाउंस किए गए थे. All right. Now, as of right now, we might say that we do not enjoy a lot of, you can say, a lot of media freedom. But what we are enjoying right now is politicizing the issue. ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक कंट्रास्ट नज़र आ रहा है. पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि प्रेस फ्री नहीं है, लेकिन कहाँ आपको नजर आ रहा है कि प्रेस के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ अमीर शकील रहमान, विच आई वुड से इज a bit on the shady side, a bit on the shady side. I will not comment on it because it is digressing from the topic. लेकिन press freedom is in danger in countries जहाँ आपके पास autocracy is the norm. And in according to a certain statistic, 34 countries are you can say in danger जहाँ आपके पास मीडिया जो है वो is in danger of being curbed down and cracked down upon. अब बात करते हैं mass surveillance की. रशिया के अंदर mass surveillance इस्तेमाल हो रही है,
अमेरिका के अंदर मैस सर्वेलेंस इस्तेमाल हो रही है। और नाउ कल की टेलीथॉन में ऑन थर्सडे पीएम इमरान खान also said that they are going to be using a database and a program for surveillance that has been developed by the ISI to trace out terrorists. Now, in these three examples, there is extreme, you can say, danger for misuse, because mass surveillance जो है वो that is a infringement of privacy, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? As long as the pandemic continues. We do not have herd immunity as of right now. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास एक vast potential है misuse का, जहाँ ये ट्रेसिंग जो है वो दैट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स, नॉट जस्ट इनसाइड पाकिस्तान बट ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल, ठीक है। मैस सर्वेलेंस जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि एक बाय वर्ड बन चुका है, जहाँ एडवर्ड स्नोडेन हु वाज अ विसल ब्लो इन अमेरिका, जहाँ उन्होंने जो है वो स्टेट और सीआईए और एफबीआई के मैस सर्वेलेंस को जो है एक्सपोज किया था। एंड वी नो कि आवर डेटा इज नॉट सेफ एनी मोर. During the coronavirus pandemic, it is going to be used as an excuse to further the state's agenda to, you can say, kind of keep tabs on the movements of its people. जैसे अब आपके पास जो है वो रशिया में एक एग्जांपल आती है बहुत अच्छी, ठीक है। रशिया इज यूजिंग अ मैस सर्वेलेंस टू कीप टैब्स ऑन इट्स पीपल, एंड एनीवन हु इज गोइंग टू लीव आउटसाइड ऑफ देयर होम शुड टेक्स्ट देयर लोकेशन एंड देयर you can say their mode or the purpose of the visit or the purpose of why they have to step outside the house. They have to text it to a certain number, whereon an electronic message will be sent to the receiver's cell phone, and then this message is to be shown to any authorities who are on the move or stop the person from going about their daily business. So रशिया में आपके पास ऑलरेडी मिस यूज जो है मौजूद है. Also inside China, mass surveillance is going to, it has been always a huge problem. जहाँ आपके पास सिंकियांग के अंदर mass surveillance जो है मौजूद है, and political dissidents have been cracked down upon. And also in context with China as well, China is now undertaking mass arrests, ठीक है, and mass crackdowns of protesters inside Hong Kong. So, in conclusion, to wrap it up, in times of chaos and crises, there are people who take advantage of the crisis and try to put forward and succeed in consolidating autocratic measures. Now, are these autocratic measures here to stay, or would they become the norm? अगर आप बात करते हैं डिमाइस ऑफ सोसाइटी की, या आप सोसाइटियल क्लास की बात करते हैं, ठीक है, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ ग्राउंड जीरो. और वो ग्राउंड जीरो कब होता है? वो ग्राउंड जीरो तब होता है जब आप लोगों के राइट्स जो हैं उनको समझना छोड़ देते हैं. एंड व्हाट इज पैरामाउंट इज आइदर टू मेंटेन द स्टेट्स रेट or to see that you are the sole purveyor of law inside the country. ठीक है, तो rate of the state can be determined by an autocrat, and the rate of the state is going to be enforced by the autocrat's own agendas and his own policies and manifestos. So in a world after the coronavirus pandemic, what we are going to be seeing is a rise of autocracy. क्योंकि ड्यूरिंग टाइम्स लाइक दीज, जब आपके पास ऐसे जो है वो इडियोटिक मेजर्स नज़र आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान एज वेल, जहाँ आपके पास अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इस्लामिक, यू कैन से इस्लामिक पंडित्स, आपकी मसाजिद जो है वो खोल दी गई है. दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ. ठीक है, इन मेजर्स के को जो है वो इम्पोज करने के लिए यू नीड टू हैव एन आयरन ग्रिप. Now this iron grip has the potential to be misused. In the same way, आपके पास अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि लॉकडाउन को वॉयलेट कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू बिकम द कॉज फॉर अ सेकेंड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन इनसाइड द कंट्री. सो कहीं आपके पास जो है वो आयरन फिस्टेड होना ज़रूरी है, लेकिन क्या इसको मज़ीद मेंटेन करना ज़रूरी है, या is this going to become a trend from now on? That remains to be seen. This concludes our argument for today. To wrap it up,
What we discussed today was number one, the rise of autocracy inside certain countries. Number two, how certain agents in the world or certain autocrats have used chaos for their own autocratic measures to consolidate their own rule. ठीक है. Number three, we are going to be seeing selective social distancing, जहाँ आपके पास जो है वो उन लोगों को बाहर जाने की इजाज़त होगी जिन जो कि स्टेट का फेवर एंजॉय करेंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं जो कि स्टेट का फेवर एंजॉय नहीं करेंगे. फोर्थ बात आपके पास क्या आती है कि आपके पास जो एक माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. एग्जाम्पल आपके पास इंडिया की है. फिर आपके पास एग्जाम्पल आ रही है कि द excuse me, that the lockdown is being imposed, excuse me, that the lockdown is being imposed forcibly inside certain countries, for example in countries in Latin America. ठीक है. Press freedom is being curbed, and along with that there is mass surveillance, ठीक है, to trace out coronavirus to trace out contacts, ठीक है, but that also has a potential for misuse. So this wraps it up. I hope this has been enlightening for you. I have included a few links, and this can be as an essay point of view inside your CSS exams as well. But let's hope for the best for your exams, and try to study up as much as you can. And आप सबके रोजे अच्छे से गुजरे. Stay safe. Allah Hafiz.